तो आज हमारे पास है रेडगियर की तरफ से आने वाला रेडगियर प्रो वायरलेस कंट्रोलर, जो कि कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है. दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक. The branding on the screen says RedGear Pro Series, and that's how the box looks like. With basic stuff. Putting this aside, that's how the controller looks like out of the box. You can see the build is quite like the Xbox 360, and some things are like Xbox Ones, like these things have been changed. However, this is still as it was in Xbox 360. So ये कंट्रोलर आपको Xbox 360 और Xbox One के बीच के कंट्रोलर जैसा कुछ दिखाई देगा. सो इसका डिटेल रिव्यू करते हैं. फर्स्ट लेट्स गो टू द बॉक्स की बॉक्स में इसके अलावा और क्या क्या है. सो काफ़ी बेसिक सा बॉक्स है. एंड इन बॉक्स वी गेट दिस थिंग which is kind of broken, जो कि शायद क्योंकि इसका पैक broken नहीं है, तो आई थिंक ये पहले ही उन्होंने broken फिक की है. उसमें एक केबल है, एक एडिशनल डोंगल है टू कनेक्ट इट अगर आपकी ये खो जाए, और एक नॉर्मल सा प्रिंट किया हुआ A4 पेपर पे पूरे इंस्ट्रक्शन है. तो इसमें दो मोड हैं जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक एक्स इनपुट और एक डायरेक्ट इनपुट मोड. So X input is like जिसमें वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग वर्क्स, और डायरेक्ट इनपुट इज़ लाइक जिसमें वाइब्रेशन मोटर्स एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ डजंट वर्क. हालांकि कुछ फंक्शनैलिटी अलग हो जाती हैं, ये मैंने देखी थी. सब फेंको साइड, ये भी फेंको साइड. अब इसमें एक और प्रॉब्लम जो है वो ये भी है कि इसमें जो केबल यानी कि जो पोर्ट है हमारे पास, द पोर्ट इज़ micro USB port. It's not a type C port. I think it's a type A or B. I think it's B. We call it B. And let me show you by zooming in. This is how it looks like. Other than that, बैटरी डालने का कोई तरीका अलग से नहीं है, पैक्ड होगी अंदर ही. और ऑन ये खुद हो जाता है as soon as you connect it to your PC like this, and then you press this button. So अभी ये X मोड में कनेक्टेड है. यहाँ पे 4 बटन हमारे बैकलाइट हैं, चारों के ब्रांडिंग और लेबलिंग बिल्कुल ऐसी की गई है जैसे Xbox के में होती है. लेआउट भी Xbox वाला ही है इसका. दिस टर्बो बटन, जो कि मुझे नहीं पता अभी तक क्या करता है. हालांकि इसके अलावा इसके बारे में अच्छी चीज़ें कुछ ये हैं कि कंट्रोलर ठीक ही है, और मैंने अभी तक इस पर स्पाइडरमैन और GTA खेल के देखा हुआ है, तो उस रिगार्ड से मुझे ठीक ही लगा. एक बार मैं आपको अभी डेमो दिखा देता हूँ. हाउ डज़ इट परफॉर्म in the case of Spider-Man. You've got Spider-Man over here. So there are vibration that you can feel in here, और buttons में ठीक ठाक tactile है function. Like this is how it performs. और बिग पिक्चर मोड को भी सपोर्ट करता है स्टीम के, अगर आप स्टीम पे इसे यूज़ करने वाले हैं तो दैट्स वन थिंग अबाउट इट. और so this is kind of how it performs. Let's put that to it. You can feel the vibration over here. At Norman's pet house.
I'm not sure if you can see it's vibrating with everything. Every rumble it vibrate. मतलब छोटा सा भी rumble होता है उसके साथ it vibrates. I did not have my laptop connected to the PC, so बहुत अच्छे frame rates नहीं आ रहे उसमें. I'm running the game on battery, तो frame rates low हैं. More and more listeners are warning that the mayor's sable agents, ostensibly here to protect us, are behaving more like an occupying army. But let's hear it from the caller. Go ahead. They won't let me in my building. Said it's quarantine. I said,